Mehbooba Mufti ji here to invite you all to really participate and contribute actively to recreating the magic that is Kashmir. You saw the natural beauty, but what we need is now for each one of you to send this message across, to become ambassadors for our state so that we have the largest number of tourists coming into J&K. The Chief Minister, the Honorable Chief Minister often says that Jammu and Kashmir is safer than almost any destination in India despite the troubles. And I can say this, I can vouch for this from my personal experience, that not only is the natural beauty breathtaking, not only is the hospitality legendary, but today you can visit the Kashmir Valley, Jammu and Kashmir, with the kind of security and safety that you can imagine anywhere in the world. Why go to Switzerland when you have Jammu and Kashmir? And Bollywood has always been a great ambassador for Kashmir, and become once again those ambassadors, those brand ambassadors, and let's recreate that magic under the leadership and vision of Madam Mehbooba Mufti. Thank you very much for being here. And Imran Khan, who has, invited many of our veteran actors, Akbar Khan Sahab, Raza Murad Sahab, Ranjit Ji, Farida Jalal Sahiba, many of you, I mean, I have seen all of you throughout my life, Kiran Kumar Ji. I'm sorry if I miss someone's name, I'm so sorry for that. اور یہاں جو ہمارے جموں کشمیر سے بھی کچھ ہمارے ساتھ ہمارے ٹور سے وابستہ ٹورزم سے وابستہ کچھ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ. میرے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری فاروق شاہ صاحب اور بھی میرے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے آفیسر شاہد صاحب, محمود شاہ صاحب, میرے اپنے آفس کے جو میرے پولیٹیکل سیکٹری امیتابھ مٹو صاحب, اور میرے اپنے اسٹاف کے جو ہمارے ساتھ او ایس ٹی اور باقی لوگ جتنے بھی میرے ساتھ ہیں, حشمت صاحب, اور خاص کر جتنے بھی یہاں آئے ہیں میڈیا کے لوگ اس وقت, سب کو میری طرف سے سلام, آداب, تھینک یو. وہ یہاں آئے تھے 1.25 سال پہلے اور کوشش کی تھی کہ جو کشمیر میں جو ایک دم سے سناٹا چھایا ہوا ہے تو یہاں کے آپ کے لوگوں سے, وہ فلم انڈسٹری کے لوگوں سے بھی ملے, باقیوں سے بھی ملے کہ اس سناٹے کو ہم مل جل کے دور کر سکیں. اور خود ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے, تو آج میں اسی کو دوبارہ یہاں آئی ہوں, اسی سناٹے کو ختم کرنے کے لیے, آپ لوگوں کی مدد, آپ سے مدد مانگنے کے لیے. کشمیر کی تعریف کرنا کوئی میرے خیال میں کوئی بات نہیں ہے, کشمیر کی میں کیا تعریف کروں. مائی فادر یوزڈ ٹو سے کہ اگر ہر مذہب میں کہتے ہیں اچھا کام کرو گے تو جنت میں لے کے جائیں گے, سورگ میں لے کے جائیں گے, یعنی مجھ سے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جنت کیا اتنی خوبصورت ہوگی جتنا ہمارا کشمیر ہے. انفارچونیٹلی کچھ حالات نے ایسا کروٹ بدلی اور کچھ ہمارے میڈیا لوگوں کی بھی ہمارے اوپر مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی کونے میں ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا خدا نہ خواستہ سارا جموں کشمیر از آن فائر. جموں میں کچھ نہیں ہوتا ہے, جموں میں سب ٹھیک ٹھاک ہے, لداخ سب ٹھیک ٹھاک ہے, کشمیر میں بھی کسی کونے میں کچھ ہوتا ہے تو پر سارا جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارا تانا بانا ہوتا ہے ٹورزم کے حوالے سے وہ سب ٹوٹ جاتا ہے. تو آج میں اتنا ہی کہوں کہ میں نے دیکھی کچھ انہوں نے فلمیں بنائی, تو مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے. I want to see the kids of Kashmir again chasing birds, bees and butterflies rather than picking up, stones and throwing it at each other. So اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی سیکورٹی فورسز, پولیس کے لوگ یا دوسرے ہمارے جموں کشمیر کے لوگ, جنہوں نے بہت قربانیاں دی پچھلے 20-25 سال میں جموں کشمیر کو اکٹھا ایک ساتھ اور یہاں ملک کے ساتھ جوڑے رکھنے میں. اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہم سب ایموشنل ہو جاتے ہیں
जब हम देखते हैं कि कोई इस किस्म से कोई वाकया हो जाता है जिसमें हमारा कोई आर्मी का जवान अभी शादी नहीं होती, एंगेजमेंट होती है, मारा जाता है, उसकी बॉडी लेके आते हैं, या कोई पुलिस का आदमी, या कोई कश्मीर का, कोई जम्मू का आदमी, तो मेरा ये है कि the biggest tribute that you can pay to the memories of these martyrs is to make it a point that you are going to visit Kashmir this year. That is the biggest thing. That is the biggest tribute. अभी हमारा अप्रैल में हमारा जो है ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है, ट्यूलिप्स आने वाले हैं, 15 दिन का हमारा वहाँ जो है एक उसमें ट्यूलिप फेस्टिवल होने वाला है। उसके बाद अभी ब्लॉसम्स भी आने वाले हैं। सबसे मुझे तो ब्लॉसम्स जब स्प्रिंग होता है सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हर जगह फूल ही फूल होते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, मैं यहाँ आई थी, एक तो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था, दूसरा मेरे फादर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिले थे, तो मैं उनसे भी मिली, मैंने उनसे पूछा, बात की, एंड आई एम हैप्पी टू से कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आज यहाँ इमरान खान साहब ने एक अच्छी मूवी बनाई है सरगोशियाँ, जिसको उन्होंने मुझे गुलमर्ग में दिखाया। तो मुझे लगता है कश्मीर क्या है, द सोल ऑफ कश्मीर ही हैज बीन एबल टू डिपिक्ट इट, और कश्मीर की खूबसूरती को उन्होंने और भी चार चांद लगाया। आज मुझे मौका मिलेगा इसको भी यहाँ दिखाने का, इसका ट्रेलर दिखाने का। तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, बट प्लीज आज मैं सिर्फ यहाँ आप लोगों को दावत देने आई हूँ। अगर पॉलिटिक्स को किसी हद तक इससे बाहर रखा जाए तो आई बी वेरी थैंकफुल। बट आई एनी क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं आप, मैं तैयार हूँ। Would you like to do that? If you can organize something, I'm ready to give you the land and whatever logical support you need. I'm ready to listen. बिल्कुल आप आइए, आप you can get in touch with my, ये आपको नंबर दे देंगे यहाँ पर सादत साहब, आप नंबर इनको दे दीजिए, he will give you an email and then we can get in touch. Of course, school is, I said, I want to see us kids again smiling. बिल्कुल उनके पेरेंट्स आएंगे, बोर्डिंग स्कूल होगा। Let's see what's happening. Thank you so much. Sorry. मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा, अभी एक बच्ची जिसने आमिर खान साहब की जंगल में काम किया, बहुत ही ज़्यादा उसकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रही है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एक्टिंग टैलेंट भी है, लेकिन उसे टैप नहीं किया गया है। बहुत बासलाहियत है, लेकिन जब तक मौका नहीं मिलेगा, जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय हीरो को तराशा नहीं जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि बात नहीं बनेगी। तो मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर करना चाहता हूँ, मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का एक तालिब इल्म रह चुका हूँ और वहाँ 5 साल मैंने कोच भी किया है। मैं चाहता हूँ कि वॉलंटरीली मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ वहाँ के बच्चों को, एक्टिंग में वहाँ आके उनको ट्रेन करना चाहता हूँ, वॉइस एंड स्पीच डिक्शन। ये मैं आई वुड लाइक टू ऑफर माई सर्विसेज टू ऑल यंग बडिंग एक्टर्स। तो ये मेरा आपको एक बड़ा ही हम्बल सा प्रपोजल है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मेरा जो छोटा भाई है तसद्दुक हुसैन, आई थिंक बहुत सारे लोग आप उसको जानते होंगे, जिसने ओमकारा शूट की है। इनफैक्ट ही हैज बीन डिस्कसिंग ए प्रपोजल कि हम श्रीनगर के नजदीक किसी गांव को फिल्म सिटी में कन्वर्ट करें, ताकि ये जो हमारा जो अपना एक तो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट कर सके, और उसके साथ साथ जो बाहर से लोग शूटिंग के लिए आते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, तो सारा कुछ हम उनको वहाँ प्रोवाइड कर सके। उसमें मुझे लगता है आपकी बिस्मिल्लाह हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। जी आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। It's a great moment. I can get the feel of the Kashmir freshness with your speech, the connect you have, the emotional connect you have with the father, who was also very well known to me, and he did definitely encourage the film industry in a big way. As you rightly said, the best one can do
is to pay tribute to all those who have suffered and who have given their lives in whatever fashion. I promise you that very soon I'll be coming up there to shoot a very beautiful film which will be based totally on Kashmir and Kashmiriyat and the most beautiful areas of your valley and Kashmir will be depicted in that film. I promise you that. Thank you so much. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. My adab and good evening to all of you. मैं यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ पर सबको एक जवाब देना चाहती हूँ. In 2016 December, I visited Kashmir alone when it was unrest. In spite of, against the wish of my family members who are decorated army officers, they refused me, but I went alone and surprised.